Okay, guys, I hope the screen is visible to all of you. If not, please let me know. Okay. Okay, Jai Hind, Jai Hind. Okay, guys. Okay, guys, so good evening to all of you. I hope each and every one of you is doing fine. We are almost going to conclude FCAT. गाइस आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के एफकैट के एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ गए हैं ठीक है सो एफकैट 2023 इंग्लिश की क्लास हो रही है सो वी विल बेसिकली वॉक थ्रू all the things that we have covered so far we will talk about some of the tips and doing these topics ठीक है and because we do not have ample time in our hands हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है so we will talk about the things which will help us last minute ठीक है so that we do not miss out on the things which are absolutely important for us to ace the exam ठीक है so without further ado guys let's quickly start by looking at the timetable for today okay so if I have to start with today's timetable, we started off with Pratik sir's class of daily current affairs, right? And after that we had Anuradha ma'am's class at 9 of mock personal interviews. And now if we have to talk about FCAT, we have already started with English complete revision. And after this, you guys will have Zahir sir's class of complete revision. So it will be class number 5. ठीक है so now, guys, if we have to talk about the next thing, which is very, very important, these are the most important topics to focus on when it comes to FCAT. Okay, so all of you can see the topics. First, we will start with spotting of errors. Then we will quickly talk about antonyms and synonyms at the same time. Then we'll be moving on to idioms and phrases. And then we will talk about fill in the blanks. After that, we will move on to word substitution, close test, and then we have ordering of sentences and comprehension. One more thing, guys, if I have to talk about, see, obviously, when we talk about ordering of sentences, it has been introduced in FCAT lately, but ordering of words is another sentence which actually is not of that importance क्योंकि एफकैट में अभी तक ऐसा आया नहीं है ठीक है और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है so you guys necessarily need to focus on the topics which have been there for a while now similar would be the case with spellings because spelling did come before but it hasn't been there for a while now so again we are not going to focus upon those topics I just wanted to put it out there right so let's quickly talk about the first topic that we have which is gonna be spotting of error so guys if we look across all these years all of you can focus so if I look at all the question like the number of questions that you guys have been getting is actually four questions. So FCAT has been very, very consistent when it comes to the number of questions of spotting of error. Every year, like be it FCAT 1 or be it FCAT 2, they have been giving all of you how many questions? Four questions. Right. So again, when I talk about the topic importance of this topic, what we need to know is in AFCAT, the questions are not going to be that difficult. Like the difficulty level is going to be from basic to medium. ठीक है जय हिंद everyone जय हिंद good evening so question again see but again if I have to talk about the conceptual part of spotting of error it actually demands for you to have deep and clear knowledge of grammatical rules, which we'll be talking about a little later. So we need to focus on the all the part of speech, be it nouns, be it pronouns, be it verb, be it tenses, be it preposition. Right? So we need to focus on all of it. Right? So what I would say is that if you get any sentence
right? So if you get any sentence, so if I say that um, I cannot play at you. Right. So if I get any sentence, so this is a very basic example. So if I get any sentence, what I should be focusing is to focus on each and every part of speech that exists in English. Right. So we can have a look at this particular list. So we need to know all the part of speeches if we want to ace it. Right. So be it noun, be it pronoun, be it verb, be it preposition, be it adjective, adverb, article, conjunction. So I need to be well versed with all of it. Then only I can ace this part. This is what I need to know. So if I get this sentence, I will maybe I can start from a noun and then I can focus, okay, what are the various pronouns that we have in the sentence, right? But again, one thing that we need to also keep in our mind is that practice will make your strategy better over time. Okay, so now since I have looked at the, okay, everything is fine with the nouns and everything is fine with the pronouns, then I will move on to verbs. Okay, now everything is fine. Let's look at the prepositions. Right, so I cannot play at you. Okay, I look at the preposition. Okay, something seems very wrong. And maybe if you have practiced so many questions, ki first glance me, you can basically rectify the mistake. Ki, okay, you know what? I can see the mistake at first glance. So that is absolutely correct. That is also fine. Like whatever works the best for you. Right, so you have to look at each and every part of speech that is existing at that point in that sentence. Right, so यहाँ पे what I can see is the mistake is with this preposition that we have. We don't say at you, right? So this is what I am exactly talking about. Okay. And one more thing, guys, you have to obviously read each and everything carefully because sometimes some questions obviously will be easier for you to rectify. But sometimes it can be a bit complex. Maybe if you get a sentence which has, which is actually in active voice, sorry, which is actually in passive voice, but they have used V1 form. Right, so that's what I'm trying to say, that you have to see each and everything clearly and then come to a conclusion that, okay, where is the error actually existing? Similar would be the question if I talk about subject-verb agreement questions. Or so if we take one or two examples that we have already covered when we were doing spotting of errors, right? So if I say that judges एग्रीमेंट ठीक है so what if guys if there's an agreement between judges so what do you guys think would we use singular verb or plural verb hmm. And if there's an like if there's a disagreement so it's pretty obvious that the rules for both of these situations would be completely different. That's what I'm trying to say. The more questions you practice, the more exposure there will be on your end when it comes to solving the questions, right? Because sometimes what students do is, okay, this is a collective noun, okay, it's gonna be singular, okay, let's go with singular. Right, but what if you get a question where there's some kind of disagreement or if there's some kind of chaos or disorder involved, right? So then you'll have to change the rule. Now it's not gonna be singular, it will become plural. So you need to be well versed with all the rules and you need to see that, okay, what is my subject? Is my helping verb right? Is my verb otherwise right? Right, so they should be in concord with each other. That's what you need to remember. Okay, everyone. Any doubt here so far? Anyone? No, No, ma'am. ma'am. Okay. So let's quickly move on to the next one, which is gonna be synonyms and antonyms.
Okay, so now if we talk about synonyms and antonym, अभी spotting error में you guys get 4 questions and they are very consistent with the number of questions, four questions. ठीक है? Now if we talk about antonyms or if we talk about synonyms, so you might get, you guys can see right here, यहाँ पे three questions, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 भी है. So we can say maybe 3 to 4 max 5, that would be the max amount of. यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 3 questions. 2020 में 2 है, but I would say all in all, mostly you guys get three questions or maybe 4 sometimes. Right. So especially for synonyms, it is only 2. यहीं पर 2 है, otherwise it has always been 3 questions. But yeah, there's obviously pretty, we can say some variance when it comes to antonyms. ठीक है? So, as we've already discussed that questions when it comes to AFCAT are not gonna be that difficult. ठीक है, उनका लेवल कुछ ज्यादा नहीं रहता है इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें. They will only vary from basic to medium level of difficulty. ठीक है, and single words are asked in questions. Like unlike other exams where they give you sentences and then they underline something. So they just give you one single word and you are supposed to guess the answer. है ना? So you need to study the antonym and synonym of each and every word. Right? Because every year we already know that, okay, when it comes to spotting of error, अगर आपका topic है, अगर आपके concepts clear है, so I'm sure you will do very well there because you have practiced so many PYQs, you have practiced so many mock questions, है ना? तो आपको वहाँ पे क्या रहेगा? You will have that upper hand when it comes to the topic. But when it comes to synonyms and antonyms, so this is something that you have to learn gradually because every year new questions will come. I don't think they are going to repeat any type of question. They don't really do that, especially when it comes to antonyms and synonyms. ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए यू ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू रीड अ वर्ड एंड यू ऑलरेडी नो द मीनिंग सो इट्स बेटर फॉर यू टू आंसर इट बट it's obviously humanly for you also or anyone who is attempting the questions that you wouldn't know all the answers, right? So in that case you will have to go through the options, right? And again it is I would suggest if you have ना अभी की तो हम बात कर नहीं सकते because we don't have ample time. We already know it, right? But I would again say that it always better to learn things if you know there, if you try to maybe learn it in context of something or you have some mind map in your head, right? Because if you cram everything on the face of this earth or whatever you are trying to learn, you won't be able to learn it properly. Right. So the next thing that we need to know is you need to use the elimination method. Right. So which one do you think like out of like if you see the question and which of the option do you think does not go with it at all? ठीक है, then you just eliminate, keep on eliminating and keep on eliminating, and then you see that okay, this one seems pretty fine, so maybe I can go with this option. Right, so this is the only thing that you can do. And along with that, guys, it's very, very important for you to go through the PYQs. Right, so you have to go through the previous year questions and actually see, what kind of questions do they really ask when it comes to synonyms and antonyms. Then what you can do is you can try to learn the variants of it. Okay? So if it's any word, like if I say happy, static, right? So you can maybe learn the synonyms and at the same time antonyms of it. Right, so it might be possible कि इस साल अगर इस टाइप का स्टैटिक पूछा है तो अगले साल एग्जॉल्टेड पूछ ले या कुछ और पूछ ले, राइट? उसी से रिलेटेड पूछ ले. सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू आर लर्निंग द synonym, you also learn the antonyms because sometimes the questions are pretty similar when it comes to meaning or the opposite word of it. ठीक है? उसी के साथ it's not just about we have already practiced so many questions when it comes to synonyms and antonyms, so you can try them as well. There are so many mock questions that you can practice and you will obviously see I have put this list out here. So most asked antonyms and synonyms, right? When you are done with those questions I would suggest then you go with this as well. You have a look at the most asked antonyms and synonyms for the exam. तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट को चेक करो, ठीक है?
आप लोग एसएसबी क्रैक एग्जाम के पेज पे जाओगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए डाले। राइट, सो यू हैव अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपको कवर करना ही है, वो तो आई गेस एवरीबडी नोज। राइट, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। हमने ये एग्जाम्पल किया भी था, लाइक जुवेनाइल इज समथिंग विच वी ऑल्सो कंसिडर टू बी चाइल्डिश, राइट, और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बीइंग यंग और टेंडर, राइट। सो द ऑपोजिट वुड बी रिलेटेड टू डॉट एज। सेनिलिटी भी एक अदर वर्ड होता है विच इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, एंटिक्वेटेड, राइट। सो दे कैन बी सो मेनी वेरिएंट। So it's more about exposure because antonyms and synonyms is would be a subject I would say जो आप last minute पे कभी भी नहीं कर सकते. I wouldn't suggest anyone. अभी आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया, इट्स द टाइम फॉर रिविजन. यू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी covered so far. So you have a look at most asked antonyms and synonyms after you are done with your PYQs, mocks, and the class questions that we have already covered. ठीक है? Is it clear, guys? Any doubt here? No, ma'am. ठीक. So now we will talk about the next topic that we have, which is going to be idioms and phrases. So now if we talk about FCAT, it is again another part of vocabulary. But when it comes to idioms and phrases, guys, we all already know that idioms and phrases, it's an interesting topic. Right, so if we try to again learn it with some kind of history, or if you have your own strategy of maybe connecting it to something that you are acquainted with, right? जिसके बारे में आपको पता है, जैसे if I talk about teething problems, right? So we already discussed it in the class that if you are talking about teething problems, so like if we talk about when does your teeth actually grows or to come. So basically, it comes at the initial stage of any human life, right? So it basically talk about the problems that you face at the initial stage of a project, right? So we can connect it. So that's my way. So you can have your own way, right? That you have been using, which is helping you because it's more about retention when you actually go and attempt your exam. Because if you're cramming, again, I say, if you're cramming everything, you won't be able to retain everything, right? Because you have other subjects also that you have to deal with. Okay? So आपको again, FCAT with 3 to 4 questions, 3, 4, 3, 4, 3, 4, pretty consistent when it comes to the number of questions. So either पे you guys got 4 questions in FCAT 4, but otherwise 3, 3, 3, 3, pretty, then 4, 6, but I would say it has to be between 3 to 4, right? So topic importance की अगर बात करें, I would say idioms and phrases is actually one of the most interesting topics out there. It's very interesting to learn about idioms and phrases. It's not that difficult. ठीक है, so questions are asked as single idiomatic expression. So they will basically give you any idiom or idiomatic phrase, right? And you just have to guess the meaning of it. ठीक है, and if we have to talk about idioms and phrases, it's an important topic again because it helps you later on also. We have already covered fill in the blanks type questions and close test, and sometimes some of the questions ask you some kind of expressions, right? So if you haven't covered idioms and phrases well, so you are going to struggle there. So it's very very important कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर चले. ठीक है. Again, if I talk about memorizing idioms and phrases, uh, as I have been repeating in every class that we have done, when it comes to idioms and phrases, that you need to do it bit by bit, right? Because if you are telling me that I can cover all the idioms and phrases in just a week, then it's not really possible because you didn't learn it in a proper way, because you didn't try to see the context of it, you didn't follow proper strategy, right? तो it will be very difficult. तो आप अभी सफर करेंगे. तो अभी आपने जितना भी लर्न किया है, कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजों को समझने की कोशिश करें, so that you can do it in a better way. I'm sure you guys might have applied all your strategies अभी तक कि किस तरीके से किसको learn करना है, visualize करना है, right? You can maybe make that mind map अभी, है ना? आप अपने जब notes बनाते हैं, I'm sure you guys must be making your notes, right? तो उसमें आप लोग उसी का mind map बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक example लें. Hmm. जैसे कि if I talk about one of the idiom and phrase, so if I talk about this one, यहाँ पे, right? If I say that strain,
Oh, strain every nerve. है ना? So this would be one idiom that relates to when you are working really hard or you are using all your force, right? तो इसी से related आपको और भी idioms phrases मिल जाएंगे like fight tooth and nail. We have covered this one. है ना? So that's what I'm trying to say. Maybe you can try things like this. So whatever works for you, it's about you. Okay, you apply various strategies. You try to visualize things your way. You make your notes. Obviously, making notes again is very, very important. So you apply that at your own pace, है ना? Do it your own way so that you can learn it in a better manner. ठीक है? And again, as I've been saying, that please try to explore the history, though we don't have much time. But I hope all of you did try to, relate it to something so that you can retain it. Because again, it's more about you retaining things. Along with it, please go through the PYQs, mock test, and the ones that we have covered in class. Along with that, there are some list of idioms and phrases which are considered to be most important. Okay, so you go through that list as well before you appear for the exam, right? So that is again very, very important. Okay, guys. So I have put some of the examples here for all of you so that you can have a glance at it as well for yourself. Okay. Similarly, you apply your own strategy so that you can learn them. Any question here, anyone so far? No, ma'am. No, man. Okay, just give me a second. Hmm. इससे पहले अभी एफकैट का कोई क्लास नहीं था ना? ओके. ओ मैम, मैथ्स का शेड्यूल था बट हुआ नहीं. हाँ, वही ना. ओके. ठीक है. ठीक है गाइस, सो वी कैन से इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, उसके बाद जब आपने इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिए, सो यू आर प्रिटी मच गुड टू गो, राइट? सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की इन फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? सो गाइस, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि समटाइम्स दे इवन गिव यू 5 questions. Right. So, आपको max usually like on an average you guys get 4 questions out of this topic, but sometimes you might also get 5 questions. So I would say this is again another topic that demands a lot of attention because sometimes there's a lot of confusion when it comes to fill in the blanks question. So we will discuss it in a while. What we need to know first is question again would vary from basic to medium level of difficulty. But at the same time, I would say that demand a lot of cautiousness on your end because the options can be pretty tricky sometimes. Okay, so you need to have clear knowledge and understanding of grammar and vocabulary, even including idioms and phrases. You need to know your part of speech very, very well. Okay, and their usage in a sentence to make the sentence complete and meaningful. Right, and question need basic to intermediate reading and comprehensive skills. Take. So first of all, we have to read the sentence very, very carefully. Okay, because sometimes the options can be very confusing, right? Because sometimes students, if students are, okay, I will give all of you an example. If I say, if there is a word secret, I didn't say secret, and there's a word covert. And if a student is in a hurry and they do not know the actual meaning of this word secretion, secreting, है ना? So what would happen is they would go for this meaning. Like if there's a question we did of Romeo and Juliet, है ना, where their affair was considered to be covert, means something which is concealed, like which is a secret, right? So the student might go for this one. They think that okay, it should be the answer.
but the meaning is completely different. So it's very, very important for you to have a sound vocabulary, especially when it comes to fill in the blanks, because some of the options can be pretty confusing and sometimes students do silly mistakes. So please have a careful look at each and every option and especially your sentence. What is the question actually asking you? Then only you can do very, very well here. Is this much clear? ठीक है. सो ये तो होगी वोकैबुलरी की बात हमने करी. ठीक है. अभी वोकैबुलरी के साथ गाइस व्हाट वी नीड टू नो इज देयर आर अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ना दैट दे कैन आस्क. Obviously vocabulary is a must, I would say. It should be primary motive for you to focus on your vocabulary when it comes to fill in the blanks. But there are questions asked from part of speech as well. They can, maybe a question is related to some kind of tense, है ना. We have covered tenses वाले question. Maybe it's related to some phrasal verb or preposition. So you have to cover all these things. And if you have actually covered these parts or these things in synonyms, antonyms, idiom, phrases, and spotting error well, so it will help you here. That's why foundation is, laying a foundation is very, very important. If you were frivolously doing spotting error, not paying attention to idiom phrases, तो यहाँ पे you will be struggling. So it's better आप start ही अच्छे से करो. ठीक है. Try to understand the structure of the sentence. Is it active voice? Is it passive voice? Is it asking for a phrasal verb? Is it asking for an idiom or some word vocabulary or whatever, right? So that you can do very, very well here. Because I find that fill in the blanks is actually pretty tricky as a topic because of the options that can exist. ठीक है, amongst the options. ठीक है. Any doubt here, anyone, before we move on to the next part? No, ma'am. Okay, so now let's quickly move on to the next one, which is gonna be sentence completion in cloze test. ठीक है. So cloze test I would say is actually one of the scoring parts. ठीक है. उसमें क्योंकि एफकैट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते क्लोज टेस्ट के, मतलब यूजुअली आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड pretty difficult questions when it comes to closed test. So I'm sure it must have helped all of you. Because you try to, practice a diverse topics so that you are not just, limiting yourself when it comes to practicing the questions. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 questions इधर आए हुए हैं. So it's an important topic and at the same time काफी scoring भी हो सकता है क्योंकि 5 questions आपको आ रहे हैं. 2020 में you guys यहाँ पे got 3 questions but now it has come up to 5. So this time also it can be 5. ठीक है. In both FCAT 1 as well as FCAT 2, as you guys can see. So what we need to know is, guys, when we talk about closed test, so obviously it comes under reading, but reading has various things that needs to be covered. First of all, we need to know is that question would vary from basic to medium level of difficulty. It won't be that difficult. ठीक है. The questions won't be that difficult, so you can score a lot of marks here. So I hope all of you have already practiced a lot of questions because we should focus on the what do you call scoring parts as well. ऐसा नहीं कि last minute के लिए उसके लिए छोड़ दिया कि I'm going to only cover it in the last 15 days and I'm not going to touch it before that, because that is again going to be very detrimental to you, because synonyms and antonyms again something is a topic which can be very, very tricky. So you do it gradually. That would be a better strategy. Again, you might have your own strategy. Okay. So question vary from basic to medium level of difficulty and blank need to be filled in the passage to complete the passage given. ठीक है. तो टॉपिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, you just need, I am sure that we all have been doing comprehension since our school days. आपके स्कूल में भी आपको ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आते थे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स डाल देते थे तो क्लोज टेस्ट हो गया. ठीक है. सो द क्वेश्चंस आर नॉट गोना बी दैट डिफिकल्ट कि आपको इतना प्रॉब्लम हो. दे जस्ट डिमांड फॉर यू टू हैव क्लियर नॉलेज, understanding of grammar, right, and vocabulary, because there are so many questions that would be based on vocabulary, including again your idioms and phrases as well, and their usage in a sentence to make the sentence complete and meaningful. So you just have to connect the dots. Okay, that's what you're supposed to do. And since it's a question of closed test,
you need to have obviously reading habit. आपको रीडिंग हैबिट होना चाहिए जिससे कि आप गेज कर सके what is the writer trying to convey to you through those words, है ना? At least basic to intermediate reading and comprehensive skills. These are imperative. So this would be the checklist that we need to cover when it comes to this topic. ठीक है? सो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखना चाहिए? ग्रामेटिकल रूल कवर किया है कि नहीं, वोकैबुलरी कवर किया है कि नहीं, एंटोनिम, सिनोनिम. सो दिस विल जस्ट गो टुगेदर, ये सब साथ में जाएगा वैसे, राइट? सो अगेन आई वुड से ग्रामर एंड वोकैबुलरी विच विल इंक्लूड अगेन एंटोनिम, synonym, phrases and idiom. So all these parts, if you have covered them well, you will do very, very good. So the strategy again that we can follow is, okay? So there are so many things that we can do, right? So some people have this habit of actually reading the question first and then skimming through it. Again, you guys have 2 hours in your hand. So what you need to do is, if it's possible, if you think, at आपको पहले ग्लांस में एक्चुअली पता चल जाता है कि पैसेज इजी होने वाला है, हार्ड होने वाला है. इतना तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? सो इफ यू थिंक दैट इट्स एन इजी वन, सो मे बी यू कैन ट्राई द स्किमिंग वाला मेथड. ठीक है, यू कैन स्किम एंड स्कैन थ्रू इट, बट again some of the question can be very, very tricky for you to answer, so then you have to kind of read it, right? So reading is very, very important. You thoroughly read to get an idea of the passage and try to read very, very slowly so that you do not miss out on any of the details. You can even mark or highlight something that you think is important, like the keywords. Okay, that is very, very important. You analyze the theme. Again, if I'm reading something, if I'm reading a piece of paragraph which talks about maybe inflation, है ना? So what basically the writer is trying to convey to me is to talk about inflation. And if I only and only, so if there's a question that I get in the exam, that what is the idea behind the passage, right? So that is what the question is. And if the passage is about inflation and I haven't read the passage carefully, right? Because I was only skimming and scanning. So again, it can be detrimental. ठीक है, उसमें मुझे ऑब्वियसली हर एक डिटेल को अच्छे से पता होगा, तभी आई कैन आंसर दैट व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू कन्वे, है ना? तो उस केस में हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग सो दैट आई नो व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, राइट? उसमें ये ना हो कि इन्फ्लेशन की जगह if there was one of the paragraph was talking about corruption, so I choose corruption because I only read about that and I didn't read the whole thing because obviously I had no strategy to follow. So you have to follow a certain strategy so that you can basically do well. Choose the correct contextual meaning of the word. Again, that is very, very important because some of the words that we get in exams have very ambiguous meanings, है ना? So similarly यहाँ पे जैसे आपको एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, अभी राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में आपको सेल दिया ये तो हमें नहीं पता है. हाउ विल यू एक्चुअली नो इट? यू विल नो इट ओनली बाय रीडिंग इट प्रॉपरली. ठीक है, तभी आप उसको बता सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से रीड करेंगे, बिकॉज सम ऑफ द इवन द ऑप्शंस आर वेरी एम्बिगुअस. इफ यू डू नॉट रीड द होल पैराग्राफ प्रॉपरली, आप कभी भी उसको आंसर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो गाइस, so what we need to know is we need to follow proper strategy, and if you think that this word can have various meanings in a particular context, so you try to read it, maybe you try to read the previous line, or maybe you try to read the line that comes later or after that, so that you can try to relate or connect the dots, because sometimes किसी भी word का meaning can be pretty confusing to understand. So you try to understand it that way जिससे कि आप उसको क्या कर सके, बेटर तरीके से आंसर कर सके. And think about the type of word to fill in the gap. Again, there are so many options that you will basically you will get options. ठीक है, so it can be from various parts, है ना? It can be from vocabulary or maybe your part of speech, or like for so to say grammar, preposition, tenses, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपने ये सब अच्छे से कवर करा ही नहीं है अभी तक, so it's gonna be difficult. So it's better guys, जो आपने नोट्स बनाए आप उनको अच्छे से रिवाइज करें एग्जाम में जाने से
पहले, so that you can fill the gaps properly और आप क्वेश्चन को क्या कर सके, अच्छे से आंसर कर सके। ठीक है, so this is about cloze test. Any question anyone यहाँ पर cloze test में? No, ma'am. Okay, ठीक है। Okay, let's move on to the next one then. चलिए guys, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉपिक्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस लेटली। ठीक है, अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये नहीं था एफकैट में। यू गाइस कैन सी इट नेवर केम 2018, 2019, 2020, 2021, नो इट नेवर केम, it just happened here, right? So in FCAT 2 you guys got it, like you guys got 2 questions, and in FCAT 3 you guys got 3 questions, right? So I would say when it comes to obviously the difficulty level, again the questions are not gonna be that difficult for anyone to solve, because they would only vary from basic to medium level of difficulty. ठीक है, so what do they do, like जैसे आपका jumble words होते हैं, so what do they do is they basically jumble the whole paragraph. So there's gonna be a paragraph and the order would be jumbled all in all. ठीक है, and you are required to arrange it in order. ठीक है, so again if I talk about ordering of sentences, it would require for you to have at least intermediate reading and comprehensive skills, है ना? And you need to so that you can properly gauge कि अच्छा अगर ये राइटर ने लिखा है तो what is the actual subject that the writer is talking about, जिससे I can start, है ना? What could be the first sentence? So it demands a clear knowledge on your end and understanding of proper and logical sentence structure. ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सके, बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल और लॉजिकली कनेक्ट कर सके सारी इंफॉर्मेशन को। बिकॉज इफ यू हैवंट रेड ऑल द ऑप्शंस प्रॉपरली, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि कोई भी मेरे को ऐसा वर्ड मिल गया, जैसे कि इफ फर्स्ट लाइन, लाइक इफ आई फाउंड द फर्स्ट सेंटेंस, है ना, जैसे कि इफ इट वाज टॉकिंग अबाउट मे बी फायर, ठीक है, एंड इफ आई फाइंड लाइक फायर लाइक और वट एवर, लाइक उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसी चीज से रिलेटेड, ब्ला ब्ला ब्ला, and I didn't read the whole thing properly, and I thought, okay, the person is giving example regarding fire, so maybe it's the next option. ठीक है, but if I read the whole thing properly, then I would know that no, this example is actually related to some other part. It is not exactly related to this one. ठीक है, so that is again very very important, because sometimes confusing questions are asked. So if you are not paying attention, so you will obviously get confused. ठीक है guys, so that is very very important. So if we talk about a proper strategy, when we talk about reordering sentence in a paragraph, try to find the clues. Try to locate things on your end. ठीक है, be it the some kind of pronoun, be it some kind of adverb, ठीक है, or maybe you find some kind of what do you call linking verb, or especially there are some adverbs which talk about some additional point, या फिर concluding point, जैसा like concluding that or something like that. You try to look for some kind of clues here and there which are planted, and they are always planted. Okay, it is only for you to find them. ठीक है, so that it will help you to strategize and actually do your answer in a like basically attempt your question in a better manner. ठीक है guys, so ये चीज हमको ध्यान में रखना रहेगा. Any doubt here anyone? No, ma'am. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, तो रीड एंड ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस. अभी ये तो लॉजिकल सी मतलब बात है कि अगर हम लोग सेंटेंस रीऑर्डरिंग की बात करें तो आपको प्रॉपर ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अगर आप ऑर्डर ही नहीं फॉलो करोगे तो हो गया, फिर तो होने से रहे आपके क्वेश्चन
ठीक है, सो यू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन केयरफुली, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप उन ऑप्शन को पढ़ें, सो दैट आप क्या कर सके, उनको लॉजिकली आंसर कर सके। ठीक है, इन केस देर इज मोर देन वन चॉइस, चेक ईच ऑफ द आंसर चॉइसेस। ठीक है, so sometimes it happens obviously ki if you find two of the options which look similar and you think that I'm pretty confused, so you try to relate it to the previous one that you found, matlab for example aapko 1 mil gaya, ठीक है, and you think that 2 and 3 are pretty confusing, and then you are confused that which one of them is actually would be the second one in order. So you try to read both of them and you try to relate to it to the first one and see which one you think fits better with the first one, and then you can come to a conclusion and choose your answer, right? Because you will definitely come across questions or some options which will be confusing, so you have to carefully take your next step, right? So that you can logically order them. Okay. And understanding the topic is absolutely important. ये तो हम सभी को पता है कि अगर हम एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में क्या आ रहा है, आपको जंबल अप करके आ रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू, राइट? इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, देन you 50% काम तो इज ऑलरेडी डन, ठीक है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाफ ऑफ द थिंग्स दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। अगर आपको सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ विड यू इवन नंबर देम ऑल टुगेदर ना, देन यू विल बी कंफ्यूज एंड यू विल गो फॉर द ऑप्शन दैट यू थिंक I don't know, I don't understand, so I'll just go for this one. Right? So you need to understand what is actually being given to you और किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। ठीक है guys? So ये तो रही बात reordering of sentences की। Any question here? Anyone? No, ma'am. No, ma'am. मैम कुछ Okay. क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं कि कोई आर्टिकल या कोई प्रिपोजिशन गायब रहता है, फिर रीअरेंज करने के लिए देते हैं, तो उस केस में कैसे, मतलब डायरेक्ट लॉजिक लगाना पड़ेगा? मतलब preposition ही गायब रहता है, ordering of sentences की बात कर रहे हो आप? यस मैम, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। मैं मतलब कुछ मॉक्स दे रही थी तो उसमें मतलब कुछ इस तरीके से मतलब अरेंज करके रखा था सेंटेंस को, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन टाइप हो गया था। आफ्टर क्लास में आपको बता देती हूँ कौन सा हाँ, क्वेश्चन। मुझे तब मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि ऑनेस्टली कि क्या अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ, क्योंकि यूजुअली आई वुड से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब व्हेन इट कम्स टू, जैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स तो और भी इजी होता है वैसे। हाँ, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी, बट हाँ, समटाइम्स यू ऑब्वियसली गेट ट्रिकी क्वेश्चंस, बट इफ यू आर समवन हु हैज दिस रीडिंग हैबिट, तो रीडिंग हैबिट है तो यू विल डू वेरी वेल हियर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू एस। ठीक है, उसी के साथ गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट, या उसी के साथ हम लोग बात करें कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग देख रहे हो कि एफकैट में कितना ज्यादा फोकस करा जाता है रीडिंग पार्ट पे, राइट? बी इट द क्लोज टेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपका ये हो गया ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी, इफ यू आर समवन हु इज एन एविड रीडर और यू आर इनटू रीडिंग हैबिट, यू विल डू वेरी वेल, right? So again, comprehension, maybe it's all about how you comprehend things and actually connect the dots, right? So 5 questions, so again it's an important topic, now it has become extremely important because 2020 se you guys have been getting 5 questions. यहाँ पे you guys were getting only 2 4 5, sorry, 2 4 2 3 4 actually, but abhi it has actually come up to 5 questions. So when we talk about comprehension, again, it's a very, very scoring topic because the questions are of basic level. What you guys have already done when it comes to your school level, so it's like, that kind of level. It's pretty easy to uh, basically tackle the questions. Okay, so the questions are asked from passage again. It's a comprehension, so it's gonna be very direct. So they will just give you a passage, they will give you a couple of questions, and you're just supposed to choose the option that you think is apt for that particular question. And at the same time, it would demand basic to intermediate reading and comprehensive skill. ठीक है, जिससे कि आप उसको अच्छे से एनालाइज करें और डिड्यूस कर सके सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम अप्रोच की बात करें तो यू कैन हैव योर ओन अप्रोच अगेन,
but it is very, very important that you read the questions very, very well. And since, I would say 70 to 80% of time the questions are very easy. So you can just, use the skimming and scanning wala method and try to, जैसे हमने class में भी किया था. We didn't read each and every detail of the passage. We just try to skim and scan through the passage to basically get our answers. Because we do not have so much of time that we have to read each and every detail until and unless it is asked. Obviously, you have to be very smart. ठीक है, थोड़ा आपको टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज करना है, वहां पे हमारे पास पूरी दुनिया भर का टाइम नहीं है. ठीक है, so try to mark the keywords properly which you think that will help you later on. Okay, now read each question with all the answer choices, right? And go back to the passage. So you can do it either way. If you think that the passage is very, very difficult, because when you read, have a quick glance at the passage and you read the question, then you understand. पहली glance में कि it's gonna be a difficult one, so I need to read it very, very properly. बट जब आपने ऐसे देखा ये तो काफी इजी लग रहा है, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द स्किमिंग एंड स्कैनिंग. बट इफ यू थिंक नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें मुझे और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, सो यू रीड एवरीथिंग प्रॉपरली. बट ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू रीड द क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचता है, आपको पता चलता है दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड एंड आई नीड टू फोकस ऑन दीज पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है, जो भी आप रीड कर रहे हो, ओके आई सॉ दिस क्वेश्चन, सो लेट मी फोकस मोर ऑन दिस पार्ट, बिकॉज यू कैन नॉट फोकस इक्वली ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पैसेज, राइट? आपको सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करना है, आपको पूरा पैसेज समझने को नहीं बोला, समरी नहीं बनानी है आपको उसकी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. So try to find out the answer and mark the right answer choice, and then you can proceed to the next question. So again, all in all, as I always say, you have your own strategy because हर student की strategy अलग होती है. So you follow your own strategy. But please try to focus on the question, like the type of question that have been asked. And if you are someone who likes to read the questions first, it's even better because it will help you to gauge, okay, these are the questions I need to focus on these parts of the passage. Otherwise, you can do your own way. Okay, guys? So this would be for mm, this approach. Now we will talk about some quick tips that we have. Okay. Okay, so first of all, you have to read the passage in a comfortable speed because if you are reading very fast, so you won't be able to get everything. Because obviously, skimming and scanning helps, but it doesn't help all the time. It depends upon the kind of passage that you get. Sometimes the passages are difficult. ठीक है, सो यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी एज पर द पैसेज और एज पर द क्वेश्चन दैट यू गेट. ठीक है, आई एम श्योर ऑलरेडी आप लोगों ने बना ली होगी क्योंकि एग्जाम तो ऑलरेडी अभी आ चुके हैं. ठीक है, सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड ट्राई टू फोकस ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ. आई वुड से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ट्राई टू फोकस बिकॉज वहीं से आपको ना आइडिया का पता चलता है, व्हाट इज द एक्चुअल टॉपिक और व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट आई सी. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, तो उससे आपको बेटर पता चल जाता है. ठीक है, again you need to improve your reading habit because we can see so many topics require you to have a reading habit. तो हम लोग को रीडिंग हैबिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस एफकैट एग्जाम के लिए. ठीक है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना अभी प्रैक्टिस किया उसको रिवाइज करो. ठीक है, इफ यू हैव टाइम तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो आई वुड से. ठीक है, so that it will help all of you. You can do PYQs and you can practice other type of questions as well. Any questions here before we move on to the next one? लास्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग जो कि है वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है. तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आई वुड से इज एक्चुअली वेरी डिमांडिंग व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी. काफी हाई ऑन वोकैबुलरी होता है. Right, so 3 questions आपको आए हैं and it has been introduced in 2022. So it's an absolutely important topic, I would say very important. काफी important topic है. ठीक है, तो question would vary from basic to medium level of difficulty. ठीक है, and questions are asked in sentences or phrases
and the candidates are required to put the sentence or the phrase in one word without altering their meaning. So they just give you either a phrase or some kind of sentence. As we did in the previous classes as well, it can be anything. So if they are asking you, maybe they can ask you about, if I say, maybe they write popular लिख दिया यहाँ पे popular female singer, है ना? So they will just give you some options. So it can be anything, artist, singer, diva, whatever, right? So there will be some options, and if you obviously are, if you have practiced your vocabulary very, very well, so you will do very, very well. ठीक है? So यहाँ पे अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमको अपनी vocabulary पे. So you need to, choose the correct option. ठीक है? Without altering the meaning, of course. And they demand clear knowledge and understanding of vocabulary. Vocabulary is a must here. So we can say reading and vocabulary is a must. ठीक है? And question need basic to intermediate reading and comprehensive skill. ठीक? So यहाँ पे what you have to cover is basically vocabulary, उसमें antonym और synonym. Again, if you have done your antonyms and synonyms, fine, you will do pretty well here. But the tricky part here is sometimes the options are very, very confusing, right? So then you need, so एक तो होता है सिर्फ vocabulary learn करना, ठीक है? एक होता है to know the actual difference, right? So एक जैसे कि मैंने ये learn कर लिया on, और एक मैंने learn कर लिया on to होता है, but I need to, it demands that deep वाला knowledge ना, so to actually differentiate between them. If I don't know that, so how will I answer the questions? तो वो पता होना इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है? अनलाइक एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में यूजुअली इतना डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं आते, बट इसमें आ सकते हैं कई बार, राइट? सो यू नीड दैट, आई वुड से, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट. ठीक है? बहुत अच्छे से, सो आप इसको क्या कर सके, आंसर कर सके. अगेन वी कैन गो विद द PYQ. ठीक है? इसके ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे. यू कैन जस्ट गो फॉर द लिस्ट दैट यू विल फाइंड. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए डालने हैं, तो आप उस पे देख सकते हैं. ठीक है? तो ये चीजों का हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. Is this much clear, guys? We have discussed the topics. Now we will talk about some general things. ठीक है? Before we move on. Any questions here, guys? No, ma'am. ठीक है. So अभी guys बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की. So give me a second. Okay. So टाइम मैनेजमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया और क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस नहीं करे, आपने पहले, काफी बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देते हैं and they never really manage their time well. So what happens at last is that when they actually are giving their exam, they definitely miss a lot of questions, due to which it hampers their score later on. So you need to practice the questions. राइट, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक क्वेश्चंस. आप करो, है ना? PYQs कभी सॉल्व करने बैठ जाओ, टाइमर लगा लो एंड देन यू सॉल्व देम. तो उसी से तो आपको फायदा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. किस तरीके से आप 2 घंटे में अपना टाइम मैनेज करके क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, है ना? सो यू रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली एंड प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन एज यू रीड देम. बिकॉज ऑब्वियसली एज अ पर्सन क्या होता है कि अगर मैंने पहला क्वेश्चन किया और वो ही इतना डिफिकल्ट है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो मेरा मोरल क्या हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, एंड आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द अदर क्वेश्चन दैट आई कुड हैव डन लेटर ऑन. है ना? अगर मुझे 10 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से मैंने पहले 2 क्वेश्चन जो करे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे एंड दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड, राइट? सो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज कि कौन सा क्वेश्चन पहले करूं कि एटलीस्ट मेरा मोरल एकदम से डाउन ना हो, ऐसे डिप ना हो जाए. ठीक है? तो इसी को बोलते हैं कि टाइम के साथ स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. स्टार्ट विथ समथिंग यू कैन रियली डू एंड डिजास्टर स्ट्राइक्स व्हेन यू फाइंड आउट यू हैव मिसअप्रीहेंड सम क्वेश्चन एंड देन टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली. अगेन द सेम थिंग, आपको एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले से ही, होपफुली अभी तक भी आपने कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो प्लीज कुछ मॉक सॉल्व करके देखिए. ठीक है? वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स पता चलते हैं, दैट वेयर आर यू एक्चुअली लैकिंग, बिकॉज यू माइट बी समवन हु हैज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज
बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, यू गेट अ गुड फ्री मिनट इन द स्टार्टिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज एज अ स्टूडेंट इवन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन पेपर मिला है तो समटाइम्स आई एम जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, बिकॉज मैं उस टाइम में क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट पासिंग माई टाइम। ठीक है, अच्छा मेरे को 15 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, ठीक है, टू रीड ऑल द क्वेश्चन, बिकॉज हर एग्जाम में क्या होता है, यूजुअली आपको एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, सो यू माइट हैव सम क्वेरीज ऑल्सो। ठीक है, तो आप वो पूछिए। सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस एंड कम अप विद स्ट्रैटेजी एज यू गो ऑन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम पास आप मत ही करो तो क्या होगा आपके लिए, बेटर होगा। ठीक है, यू गेट अ गुड फ्री मिनट इन द स्टार्टिंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर एंड यूज टाइम टू डू सिंपली रीड, क्योंकि आपको रीडिंग के लिए बोला गया तो रीड ही करोगे ना, उसमें आप टाइम पास मत करो तो ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, and manage your time. So all in all, what I'm trying to say is please do not pass your time. Have a strategy. If you don't have one, please have one strategy. Try to solve questions so that you know where you are lacking and you can try to cover it up. Because this is the time when you should have solved some of the questions और आपको अपने drawbacks पता चल जाने चाहिए थे कि ये पार्ट में मुझे ज्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे मुझे बेटर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी टू अगेन, दिस इज वेरी वेरी जनरल, यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर। सी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश का पार्ट, तो एक तो आपका ग्रामर पार्ट लाइक योर पार्ट ऑफ स्पीच, उसी में सभी कुछ आ जाएंगे जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं। उसी के साथ आपका वोकैबलरी आ जाएगा, वोकैबलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ आपके क्या हो गया, रीडिंग स्किल्स। तो ये तीनों चीजों पे आपको क्या करना है, इक्वली ध्यान देना है। I would say when it comes to reading it is somewhat relatively easier to ace। ठीक है, तो आप उस पे ध्यान दें। क्यों, और अगेन अगर हम बात करें ग्रामर की या फिर आपके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो इट इज समथिंग आई वुड से विच इज कंसेप्चुअल, तो आप उसको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे तो वो तो ज्यादा टाइम तक आप रिटेन कर ही सकते हो, क्योंकि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मुझे उसको डेली इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना कंपेरेटिवली आपको वोकैबलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वोकैबलरी समथिंग जो थोड़ा ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। अभी एक महीने में तो ऐसा तो नहीं है कि आप शशि थरूर बन जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, राइट, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। सो यू हैव टू बिल्ड इट ग्रेजुअली, दैट्स व्हाई एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो यू नीड टू सी द PYQs, जिससे कि आपको पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से मैं क्या करूं, प्रैक्टिस करूं। और आपके खुद के पर्सनल नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि नो मैटर हाउ मच मटेरियल यू हैव, बट आपके खुद के नोट्स हमेशा आपको बेटर हेल्प करते हैं रिटेन करने में चीजों को। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू फॉलो, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव योर ओन स्टडी मटेरियल। ठीक है, आपके नोट्स होंगे, बट नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्राई टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज, है ना, बहुत तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको क्या हो, आइडिया हो अपनी स्पीड का, अपने ड्रॉबैक का, और कहाँ पे मेरे जो एरियाज हैं उन पे मुझे वर्क करना है। ठीक है, सो PYQs तो अगेन इज अ मस्ट, मतलब वो तो होना ही होना है। ठीक है, उसी के साथ स्टार्ट स्टडिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमारे पास इतना फेयर अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। सो इट्स हाई टाइम की वी प्रैक्टिस द मॉक क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट लास्ट मोमेंट पे जो भी आ चुका है, अभी इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी हमें रिविजन करना है। सैंड प्लीज ट्राई टू रिलैक्स, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी स्ट्रेस्ड काफी ज्यादा, बट आपको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। आप रिलैक्स अभी तभी कर सकते हो जब आपकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी रही है अभी तक। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी इज अ मस्ट। एंड वन लास्ट थिंग गाइस दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो इज, हम लोगों का एफकैट का मैराथन शुरू होगा, महा मैराथन, जो कब से कब तक होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर कोर्स एज यू गाइज ऑलरेडी नो। सो वी विल हैव अ मैराथन, जो महा मैराथन होने वाला है हम लोग का 20th से 23rd तक होने वाला है। ठीक है, सो यू गाइस कैन सी कि क्या क्या टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहे। तो 3 to 4:30 इंग्लिश का मैराथन होगा विद अनुराधा मैम। 4:30 to 6 आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी विद मयंक सर। ठीक है, उसके बाद 6 to 7:30 आपका होगा स्टैटिक जीके विद दिव्यांशु सर।
और उसी के साथ 7:30 to 9 होने वाला है आपका रीजनिंग विद सत्यम सर। ठीक है, तो ये आपका मैराथन होगा। ठीक है, सो दिस इज गोना बी द शेड्यूल फॉर द कमिंग वीक। इज इट क्लियर गाइस? एनी डाउट हियर? नो मैम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? आपने कुछ भेजा है क्या मुझे? यस मैम, मैंने भेजा था वो क्वेश्चन रिलेटेड टू जंबल्ड सेंटेंसेस। अच्छा, मेरे को एक बार ही देखना पड़ेगा खोल के, वेट, डाउनलोड। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, Ma'am, should I send it in the group? Then you would be able to open it. या बिकॉज अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग में वो करूंगी तो वो हो जाएगा, मेरे को वही लग रहा है कि No हाँ, issue. आपको जितना इजी लगे। हाँ, तो मेरे को वही लग रहा था। अच्छा, आप टेलीग्राम पे भेज रहे हो ना मुझे? नो मैम, अभी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तब वही भेज देती हूँ। रुक जाओ, एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर द सेशन। we'll be seeing you for the marathon very soon, and तब तक के लिए take care of yourself and please practice well and